You know, it's funny how progress works. Sometimes it's about building these huge next-generation helicopters. And other times, it's about decoding the faint heartbeat of a planet that was frozen solid millions of years ago. Today, we're going to connect the dots between three really different stories: a huge leap in manufacturing, a fight that's happening right in our grocery aisles, and a wild discovery that's making us rethink our planet's deep, deep past. So, all the insights for today's explainer are coming from the UPSCruX Digest. Now, these stories might seem totally unrelated at first glance, but let's dive in and see what they can tell us about our world. So, what's the common thread here? From building the future to digging up the past, well, it all tells us something about right now. We're going to unpack a major manufacturing milestone, a really critical debate over what's in our food, and a discovery that changes our view of Earth's most extreme climates. Okay, so here's the plan. First, we'll talk about a huge milestone for India's helicopter industry. Then, we're moving on to a debate over food labels that could affect all of us. And finally, we're going to take a trip way, way back in time to explore this idea of a snowball Earth. Let's get started. All right, part one. This is a big one. We're talking about a major step forward for India's private manufacturing scene. And, a huge boost for that whole Make in India initiative. And we're not talking about just anything. We're talking about some seriously high-tech aviation. Okay, so what makes this such a big deal? It's all about the partnership. This is the very first private helicopter final assembly line in India, and it's a team-up between two heavyweights, India's own Tata Advanced Systems, or TASL, and the European aerospace giant Airbus. They're setting up shop in Karnataka to build the Airbus H125, which is a super versatile helicopter. And really, this is about more than just building helicopters. It's about building up India's own strategic capabilities. And yeah, this is not a small-time operation. We're talking about an investment of over 1,000 crore rupees. That number right there tells you everything you need to know about the scale and the ambition of this project. This is a serious, long-term commitment to building a world-class aerospace industry right there in India. And this facility is going to do the whole shebang. We're talking manufacturing, putting it all together, testing, and even maintenance down the line. The first helicopters should be ready to go in 2027. But what's really interesting is that the vision here goes way beyond just India's needs. They're looking at exporting these helicopters across South Asia. This could really position India as a major player in the whole regional supply chain. Okay, let's switch gears completely. We're moving from the factory floor right into our kitchen pantries. Our second story is about a really critical public health debate that honestly could change how every single one of us shops for food. So the core of this whole thing is something called front of package labeling, or FOPL for short. The idea is pretty simple. Instead of having to, turn the box over and try to read those tiny nutrition facts on the back, you'd get a clear, simple warning right on the front. A heads up if a food is high in stuff like sugar, salt, or saturated fat. It's all about making it easier and faster to make a healthy choice. But why is this so important? Well, this is why. According to the Indian Council of Medical Research, there are 101 million people with diabetes in India. Let that sink in. This isn't some abstract policy discussion. It's a direct response to a massive, and I mean massive, public health crisis. So the debate really boils down to two different ways of doing this. On one hand, you've got warning labels, just straight up, easy to understand warnings. This is the approach the Supreme Court has advocated for, and it's worked well in other countries. On the other hand, there's a proposal for an India nutrition rating system, which would be more like a star rating. So you can see the tension, right? It's between direct, clear information and a more, let's say, nuanced rating system. And the organization that has to make the final call here is the Food Safety and Standards of India, the FSSAI. And believe me, the pressure is on them to finalize these rules. Whatever they decide is going to have a huge impact on the entire packaged food industry in India. All right, for our final story, I want you to buckle up because we are taking a huge leap back in time. We're talking about 700 million years ago to a planetary scale mystery that is seriously challenging what we thought we knew about our planet's history. They call this period Snowball Earth, and honestly, it's pretty much exactly what it sounds like. We're talking about a time of such intense global glaciation that ice sheets might have covered the entire planet, from the poles right down to the tropics. Just try to picture that, our blue planet as one giant white snowball hurtling through space. Now, this deep freeze happened during the time called the Cryogenian period,
and it lasted from about 720 million years ago to 635 million years ago. So we're not talking about a little ice age, we're talking about a cold snap that went on for tens of millions of years. Now, for a long, long time, scientists just assumed that the climate during this period was totally static, just frozen, solid, and unchanging. But here's the twist. A new study has revealed something absolutely incredible. The climate wasn't static at all. It actually had a pulse. So how in the world did they figure that out? Well, it's some pretty brilliant scientific detective work. They looked at over 2,600 layers of ancient sediment, they're called varves, from a site in Scotland. The best way to think about these varves is like tree rings, but for the whole planet. Each tiny layer is a record of 1 year's climate, trapping all these clues about what was happening way back when. And what they found, hidden inside those frozen layers, was just amazing. They found evidence of climate cycles we'd recognize today, things like the 9 to 11-year sunspot cycle, longer ones like the Gleisberg cycles, and even patterns that looked a lot like our modern El Niño. It's like the Earth's climate system was still breathing, It shows this incredible resilience, even when it was covered in a thick blanket of ice. And that kind of brings us full circle, doesn't it? Whether we're talking about building helicopters and strategic independence, or figuring out how to balance public health with industry needs, or even uncovering the incredible resilience of our own planet's ancient climate, it's clear that progress is happening on all these different fronts, all at the same time. It's all pushing our understanding of the world forward. So, at the very same moment, we're piecing together our planet's deepest, most ancient past, while also building its most advanced future. It's pretty amazing when you think about it. And it really leaves you with one big question, right? What other puzzles are we on the verge of solving next? Thanks for joining me for this. नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार करंट अफेयर्स चैलेंज। चलिए देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी शार्प है। ये सारे सवाल हमने हाल ही के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स से चुने हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट मौका है अपनी नॉलेज टेस्ट करने का। सिर्फ 5 सवाल हैं। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इंडिया इज गेटिंग इट्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL। वेयर इज दिस पायनियरिंग फैसिलिटी बीइंग सेट अप? आपके ऑप्शंस हैं A हैदराबाद तेलंगाना, B वेमागल कोलार कर्नाटका, C पुणे महाराष्ट्र या D चेन्नई तमिलनाडु। सोचिए। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, ये फैसिलिटी कर्नाटका के कोलार जिले में वेमागाल नाम की जगह पर बनाई जा रही है। ये इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, एक रियल गेम चेंजर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी टॉपिक से जुड़ा है। सवाल है, Which two major companies have partnered to establish this final assembly line FAL to manufacture the H-125 helicopter? आपके ऑप्शंस हैं A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL and Boeing, B Tata Advanced Systems Limited TSL and Airbus, C Mahindra Aerospace and Lockheed Martin या D Reliance Defense and Dassault Aviation। दिमाग पर जोर डालिए। और इसका सही जवाब है एक बार फिर ऑप्शन बी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरबस। बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क पार्टनरशिप है। एक तरफ है इंडिया की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी टास और दूसरी तरफ है फ्रांस की एरोस्पेस जायंट एयरबस। दोनों मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर के लिए ये फाइनल असेंबली लाइन बना रहे हैं। और आप इस प्रोजेक्ट का स्केल देखिए, इसमें 1000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। चलिए अब गियर चेंज करते हैं। एरोस्पेस से निकलकर अब हम चलते हैं पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन की तरफ। बात करेंगे उन फूड लेबल्स की जो हम रोज देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली अर्ज्ड द FSSAI टू इंट्रोड्यूस FOPL फॉर अनहेल्दी पैकेज फूड्स। व्हाट डज FOPL स्टैंड फॉर? ऑप्शंस हैं A फूड ओवरव्यू एंड पैकेजिंग लॉ, B फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, C फाइनल ऑर्डर ऑन प्रोसेस्ड लिक्विड्स या D फूड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग लिमिट्स। क्या लगता है आपको? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग। तो FOPL का फुल फॉर्म तो आप जान गए, पर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी पैकेज्ड फूड है उसके पैकेट के आगे ही फ्रंट में एक साफ साफ वार्निंग लेबल लगा हो। पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
देखिए, इसका मकसद है कि आप और हम जैसे कंज्यूमर्स को आसानी से पता चल जाए कि हम क्या खा रहे हैं, खासकर उन चीज़ों के बारे में जिनमें शुगर, सॉल्ट या सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, ताकि हम बेहतर इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें और लाइफस्टाइल डिजीजेस से बच सकें। अच्छा, अब तैयार हो जाइए एक टाइम ट्रैवल के लिए। हमारे आखिरी 2 सवाल आपको लाखों साल पीछे धरती के प्राचीन इतिहास में ले जाएंगे। सवाल नंबर 4। The term Snowball Earth refers to a period of global glaciation. During which geological period did this occur? आपके ऑप्शंस हैं A. Jurassic period, B. Cambrian period, C. Cryogenian period या D. Cretaceous period। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। सोच लिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, द क्रायोजेनियन पीरियड। जी हाँ, स्नोबॉल अर्थ वो समय था जब हमारी पूरी धरती एक बर्फ का गोला बन गई थी, और ये हुआ था क्रायोजेनियन पीरियड में, आज से लगभग 720 से 635 मिलियन साल पहले। इमेजिन करके देखिए। और अब आ गया है आखिरी सवाल, फाइनल क्वेश्चन। इसका सही जवाब देकर आप 5 on 5 स्कोर कर सकते हैं। सवाल है, What specific geological evidence from Scotland was used to detect ancient climate cycles during the snowball Earth phase? Options हैं A. Volcanic ash layers, B. Sediment layers known as varves, C. Fossilized coral reefs या D. Trapped air bubbles in deep ice cores. सोच समझकर जवाब दीजिएगा। And the correct answer to the final question is option B, sediment layers known as varves। बहुत बढ़िया अगर आपने ये गेस कर लिया था। ये वार्स आखिर हैं क्या? आप इन्हें प्रकृति की डायरी समझ सकते हैं। ये सेडिमेंट या तलछट की सालाना परतें होती हैं, जैसे पेड़ों में रिंग्स होती हैं। हर साल एक नई लेयर। इन्हें स्टडी करके साइंटिस्ट्स पुराने मौसम का हाल जान सकते हैं। और ये सबूत मिला स्कॉटलैंड से। वहां साइंटिस्ट ने 2640 वाव लेयर्स को एनालाइज किया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें पता चला कि स्नोबॉल अर्थ के दौरान भी क्लाइमेट स्टैटिक नहीं था। उस वक्त भी एल नीनियो और सनस्पॉट जैसे क्लाइमेट साइकिल्स चल रहे थे। कमाल है ना? तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का क्विज चैलेंज। आई होप इसमें आपको मजा आया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा। तो अब आई स्कोर बताने की बारी। 5 में से कितने जवाब आपके सही थे? अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।